प्यारे बच्चे सत श्री अकाल। तो अज असीं करन जा रहे हैं टर्म नंबर 1 क्लास 8वीं सबजैक्ट इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर। टाइम 1 घंटा 30 मिनट है। मैक्सीमम मार्क्स 40 हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। द क्वेश्चन पेपर कैरीज 40 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 1 मार्क। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नो चॉइस इज गिवन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, चलो हुण आपां इसनूं शुरू करते हाँ। तो सब तो पहला है सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये इन्हां दे उत्तर आपां ने देने हैं। तो जो क्वेश्चन हैं वह अगले पेज उत्ते हैं। तो इसनूं सब तो पहला एक बार तुसीं पढ़ लो और उस बाद आपां क्वेश्चन सॉल्व करते हाँ। सब तो पहला प्रश्न है वट इज़ द पोस्टर अबाउट। ए डिक्रीजिंग प्लास्टिक डेब्रिस, बी एक्सपेंडिंग प्लास्टिक वेस्ट, सी रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, सी डी नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ए डिक्रीजिंग प्लास्टिक डेब्रिस। नंबर 2 विच मटीरियल शुड बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग। ए प्लास्टिक, बी क्लोथ, सी माइक्रोफाइबर, डी पेपर। तो इसका उत्तर है बी क्लोथ। वट डस एंटर वाटरवेज आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स। ए पेपर, बी प्लास्टिक, सी माइक्रोफाइबर, डी बटन। तो इसका उत्तर है सी माइक्रोफाइबर। How much plastic debris floats on the surface? A. Above 2 lakh tons. B. Below 2 lakh tons. About 26 lakh tons. D. About 26 lakh tons. तो इसका उत्तर है C. Above 26 lakh tons. Read the dialogue and answer the questions 5 to 8 that follow. Pratap. Hi Ravinder, how are you? Ravinder. I am fine. What about you? Pratap. I am also fine. Ravinder. Pratap, what's your opinion about yesterday's science exhibition? Pratap, it was great. There were many things to learn about. I got a lot of knowledge from that. Ravinder, yeah, a science exhibition should be like that, full of knowledge. I am very inspired by the lights which can be turned on and off by sounds. Pratap, exactly. That was great. Also, the small dam model for energy generation was good. Ravinder, that model got too much attention from the people. Pratap, actually, the tiny robots were also interesting. It's good to see how they worked. Ravinder, whole of the exhibition was good. Pratap, okay, I have to go to work. Ravinder, okay, bye. Fifth question, what is the conversation about? A. Science fair, B. Party, C. Books exhibition, D. Cricket's match. तो इसका उत्तर है A. Science fair. 6. What was the use of dam as shown by its model? A. To produce biogas, B. To produce electricity, C. To produce natural gas, D. To increase sea level. तो इसका उत्तर है B. To generate electricity. Number 7. What was turning on and off by sound? A. Lights, B. Fans, C. Tube lights, D. Television. तो इसका उत्तर है A. Lights. 8. What was not there in the exhibition? A. Lights, B. Model of dam, C. Mobile phones, D. Sounds. तो इसका उत्तर है C. Mobile phones. Section B. Textbook. Question number 9. What were the features of Bell computer that were being advertised on TV? Value of money chapter cho. A. The slowest processor, B. The fastest processor, C. The high storage, A. Both B and C. तो इसका उत्तर है A, D. Both B and C. Question number 10. What did the mother drop along the way? The aged mother. A. Flowers, B. Leaves, C. Twigs, D. Trees. तो इसका उत्तर है C. Twigs. 11th question. What were the main points of Sant Ravidas teachings? Sant Ravidas. A. All are equal in the eyes of God. All distinctions are meaningless. Untouchability is a sin against humanity. D. All of the above. तो इसका उत्तर है D. All of the above. Question number 12. What did Harry ask for? The old sage and the brothers. A big house and poultry farm, a big house and 10 cows, a big house and a field, none of the above. तो इसका उत्तर है B. A big house and 10 cows. Question number 13. Why could the sage not cross the river? The old sage and the brothers. A. Because there was no boat. B. Because there was no ship. C. Because there was no water in the river. D. Because there was no boatman. तो इसका उत्तर है A. Because there was no boat. Question number 14.
When and where was Sant Ravidas born? A. In 1387 in Banaras. B. In 1376 in Banaras. C. In 1377 in Banaras. D. In 1777 in Banaras. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ C. In 1377 in Banaras. What is the meaning of the word plight? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ A. ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 16 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਫਰਾਈਟੀ ਦ ਏਜਡ ਮਦਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੂ ਸੈਡ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਟੂ whom? Give me more chores. Value of money. A. The narrator to her father. B. The father to the narrator. C. The narrator to the bell employee. D. The bell employee to the narrator. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ A. The narrator to her father. 18th. Identify the underlined character in the given sentence. He listened and meditated in silence. The aged mother. He ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? A. The aged mother. B. The farmer. C. The despotic leader. D. The villager. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ C. The despotic leader. Read the given stanza and answer the questions. ਜੋ ਵੀ ਹਨ stanza ਹੈ and you never can tell just how close you are. It may be near when it seems far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worse that you must not quit. 19th question. Name the poem and the poet. A. Dr. APJ Abdul Kalam. B. Edgar A. Guest. C. Ruskin Bond. D. William Shakespeare. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ B. Edgar A. Guest. प्रश्न नंबर B. What should be done when things seem worst? A. We should not quit. B. We should quit. C. We should cry. D. We should run away from the situation. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ A. We should not quit. प्रश्न नंबर 21. What are some single use plastic things that we buy and use? The earth needs you. A. Plastic bags. B. Straws. C. Water bottles. D. Above. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ D. All of the above. प्रश्न नंबर 22. What does another blow mean? Don't quit जो चैप्टर जो है A. Another gust. B. Another storm. C. Another effort. D. Another throw. तो इसका उत्तर है C. Another effort. Section C. Vocabulary. प्रश्न नंबर 23. What do we call a person who can speak many languages? A. Polyglot. B. Tattletale. C. Glutton. D. Audible. तो इसका उत्तर है A. Polyglot. प्रश्न नंबर 24. Add the right prefix to the word patient. A. Pre-patient. B. Dispatient. C. Impatient. D. Impatient. तो इसका उत्तर है C. Impatient. सेक्शन D ਦਾ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇਹ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਾਈ ਮਦਰਸ ਕੁੱਕ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 26 ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ B ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। किसी ने मुझे बुलाया है। प्रश्न नंबर 27 वह बहुत मतलबी है वह बहुत स्वार्थी है। तो इसका उत्तर है C ही इज़ वेरी सेल्फिश। प्रश्न नंबर 28 पुलिस ने चोर को नहीं फड़िया है। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। तो इसका सही उत्तर है D द पुलिस हैज़ नॉट कॉट द थीफ। 29 चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। What a disaster the earthquake is। तो इसका उत्तर है C the disaster is earthquake। नंबर 3 which part of speech does London belongs to? A noun, B pronoun, C adjective, D adverb। तो इसका उत्तर है A noun। 31 fill in the blank with suitable determiner। He takes dash interest in me। A any, B all, C no। तो इसका उत्तर है C no। 32वां प्रश्न है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग इट। ब्यास फ्लोस इन पंजाब। तो इसका उत्तर है A द ब्यास फ्लोस इन पंजाब। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट
degree of adjectives. 33 question. Soumya is dash then Vijay. A funny, B funnier, C funniest, D funnier. तो इसका उत्तर है B funnier. नंबर 34. The Taj is a dash building. A beautiful, B more beautiful, C most beautiful, D beautifulest. तो इसका उत्तर है A beautiful. 35. Fill in the blanks with appropriate non-finite form. You ought dash up earlier. A get, B to get, C getting, D got. तो इसका उत्तर है B to get. You have lost a bag in your school. Answer the following question according to the notice you would put up on notice board. प्रश्न नंबर 36. What would you write in the notice? तो इसका उत्तर है A. It has some books and important paper. प्रश्न नंबर 37. What details would you write in the end? A. Your name, B. Your class, C. Your roll number, D. All of the above. तो इसका उत्तर है D. All of the above. प्रश्न नंबर 38. You have to write a letter to your friend to invite him on your brother's marriage. How would you start the body of the letter? तो इसका उत्तर है B. I am extremely happy to inform you. You have to write an application to the principal of your school asking him her for a school leaving certificate. Answer the questions accordingly. प्रश्न नंबर 39. What would you include in the application? A. Your reason for leaving the school. B. When you will leave the school. C. Where you will take admission after leaving the school. तो इसका उत्तर है D. All of the above. प्रश्न नंबर 40. How would you greet the principal? A. Respected sir ma'am. B. Hello sir ma'am. C. Hi sir ma'am. D. None of the above. तो इसका उत्तर है A. Respected sir ma'am. तो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।